Good morning, dear children. Now, today we will start chapter 11 in s.s.t. Now, come on, children. Chapter number 11. The name of the chapter is The Development of Medical Science. In this lesson, we will learn about the invention of instruments like thermometer, stethoscope, microscope, etc. Second, contribution of the scientists in the field of medicine. Third, rules of basic health care and hygiene. Children, you know that in ancient times people used to think that disease were caused by evil spirits. To cure to cure them, they worshipped various forces of nature as gods and goddesses. In ancient times, people believed that diseases were caused by evil spirits. Evil spirits कोई भी जो बुरी शक्ति उसकी वजह से आती है. Okay, so today with the development of medical science, we have developed various methods and instruments to identify a disease. We are much healthier than our ancestors. Ancestors में मीन्स हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हम ज़्यादा मतलब अब ज़्यादा जो है डिजीज़ का प्रिपेयर होते हैं डिजीज़ के लिए. ओके, हेल्थ तो हमारी ज़्यादा अच्छी होती है. So we have a large number of medicines and other medical facilities to prevent disease. Many instruments have been developed in different parts of the world. Children, you know that whenever you feel fever, then you take temperature of your body with clinical thermometer. Okay, you know that बहुत सारी चीज two types of thermometer are here: digital thermometer and analog thermometer. So we will read. You use these thermometers. You know the exact temperature of a patient's body. The thermometer gives the exact temperature of a human body in Celsius और Fahrenheit में होते हैं दोनों. The exact reading can help the doctor to prescribe the right treatment. और सबसे पहले थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर नोट किया जाता है, उसके बाद ही जो भी मेडिसिन वगैरह देनी होती है वो प्रोवाइड करता है डॉक्टर. सो द क्लिनिकल थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाय डैनियल Gabriel Fahrenheit in 1715. Okay, underline this line, children. लोअर पैराग्राफ. द क्लिनिकल थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड. सबसे पहले किसने किया? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1715. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4 डिग्री एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड में. व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव द लेवल वी हैव फीवर. तो इससे ज़्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर जाता है तो वी हैव फीवर. Nowadays both analog and digital thermometers are used for measuring the body temperature. You can see in this picture digital thermometer and analog thermometer. In analog thermometer you can see there is a mercury जो है टेम्परेचर जैसे आपके राइज होता है उसके अकॉर्डिंग वो इतना ही राइज हो जाता है. ओके, दैट स्टेथोस्कोप. Next is the stethoscope. The invention of stethoscope derives its inspiration from a child's play. Okay, Rene Lene, a doctor, was on his way to clinic. He observed two children talking to each other, holding the two ends of a long tube like a log. The child was whispering, and the other child couldn't hear him loud and clear एट द अदर एंड. आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स जो है छोटे बच्चे भी करते हैं कि टू एक बीच में जो है वायर ले लेते हैं और एक अदर साइड में खड़ा हो जाता है, दूसरा अदर साइड में, और एक जना सुनता है एक जना बोलता है. कप या तो उसको कप का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कप का, इस तरह से. तो इसी तरह से उन्होंने देखा, उसको देख के उन्होंने एक आइडिया आया क्या बनाने का? स्टेथोस्कोप. दिस कॉल्ड स्टेथोस्कोप वी यूज़ डॉक्टर यूज़ टू हियर आर हार्ट बीट सुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं. दिस gave him an idea. He rolled up a paper into a hollow tube and put it against a patient's chest. To his surprise, he clearly heard the patient's heartbeat and the movement of the patient breathing. In course of the time, the hollow tube came to be developed into the stethoscope we see today. You can see the stethoscope. Every doctor use this for
check patient's heartbeat. So patient's heart and lungs, and find out whether they are working as well as they should. Next instrument is microscope. You can see in this picture microscope. What does work of microscope? Microscope is a machine to see, we can see minor organism जो हमें आँख से नहीं दिखते हैं. We cannot see our eyes, so we need microscope to see this type of organism. One celled organism you will read in next classes, 9-10 classes. So microscope, combination of two Greek words, micros or small. Micro means small, and scopes or watcher. So it is a watcher of small thing. The microscope is an instrument used to see tiny germs which are otherwise invisible to the eye. Okay, so हमें जो eye से नहीं दिखता है, आँखों से नहीं दिखता है, we can see with the help of microscope. About 400 years ago, lenses were used to make spectacles. In 1590, a man selling spectacles accidentally placed two lenses, one in front of the other. As he glanced through it, he saw fly as big as his hand. Okay, तो by mistake जो है 1590 में टू लेंसेस लग गए आगे आगे की तरफ, तो उससे जो है जो थिंग है वो और ज़्यादा enlarge हो गई. दिस वॉज अमेजिंग एंड द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. Galileo, Galileo of Italy made a compound microscope using the idea. तो इस आइडिया का यूज़ करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया सबसे पहले गैलीलियो ने. He combined two lenses to make a microscope. Underline this line. With the help of the microscope, scientists were able to see microorganism. Microorganism means जो smallest organism, वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें लाइक बैक्टीरिया, वायरस. ओके, वी कैन नॉट सी फ्रॉम नेक आई. ओके, हम खाली आँखों से इनको नहीं देख सकते, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा. Today we have many powerful microscopes. The electron microscope magnifies an object millions of times. Its use as help in the fight against many dreadful diseases. जो ऐसी डिजीज़ ख़राब डिजीज़ है उनको फाइंड करता है, और उसके हम उसकी मेडिसिन ले सकते हैं. ओके, सो यू नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर मशीन्स. चिल्ड्रन, whenever you go doctor for orthopedic doctor, ओके, तो ज़्यादातर क्या देते हैं आपको, कोई भी जो बोन्स में चोट वगैरह आई हो तो क्या करने के लिए बोलते हैं, या फिर जो एक्सरे के लिए बोलते हैं. एक्सरे, यू नो अबाउट एक्सरे मशीन्स, आपने कई बार करवाया भी होगा पेरेंट्स के साथ जाके. एक्सरे मशीन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द डॉक्टर टू सी इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी. तो एक्सरे मशीन जो है इंटरनल हमारे पार्ट्स की भी रिपोर्ट देती है. इट हैज़ लाइक अ पिक्चर, इट्स लाइक अ कैमरा. ओके, तो इट्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट द डिजीज विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ब्लड टेस्ट्स एक्सेट्रा. इट हैज़ टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन द बॉडी. तो बॉडी में जहाँ भी आपका फ्रैक्चर हुआ है वो एक्सरे मशीन के थ्रू हमें पता लग जाता है. वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम एक्सरे मशीन. एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय W.K. Rontgen in 1896. Okay, underline this line. Besides, X-ray machines nowadays have CT scan, ultrasound, and magnetic resonance imaging (MRI). These machines help the doctor to give a complete picture of the organs of our body. तो एडवांस मशीन हो गई हैं जो कि पूरी जो है इंटरनल बॉडी के एवरी पार्ट की पिक्चर दे सकती हैं. ECG and EEG machines are used to monitor heart and brain respectively. All these machines help in surgery. So children, you will read these topics, and next video we will take other topics of this chapter. Have a good day.